Hello everyone, I hope you all are doing great. So today again I'm up with one more video, and this video is basically going to talk about Indian Contract Act of 1872. This act is very important if you are a BLLB or a LLB student. This video is very important if you are preparing for any competitive exam, be it UGC NET, Judiciary, CA, CS exam, etc. So today this video basically will be talking or introducing various words to you, like what do you mean by the term proposal, what do you mean by the term agreement, consideration, promise. Okay, so without wasting any time, let's start. So it is very important for you to know that when did this act actually start. This act came into force on 1st September 1872. It has near about 266 section. If I divide section 1 से लेके 75 तक, they are the general provisions which we gonna study in a series of lectures. General provisions हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेके 75 तक. 76 से लेके 123 तक we are having the concept of sale of goods act. Sale of goods. This topic 76 से लेके 123 will be talking about sales of goods. Talking about section 124 से लेके 147 तक, it deals with the concept of indemnity. This was the concept of indemnity. 148 से लेके 181, it deals with the concept called bailment. 182 से लेके 238, it deals with the concept of agency. 239 से लेके 266 तक, it deals with the concept of partnership. It is very important for you to know that this sale of goods concept from section 76 से लेके 123 तक, it got repealed in the year 1930. Talking about the concept of partnership from 239 to 266, it was repealed in the year 1932. It was repealed in the year 1932 and a separate act, Partnership Act, was formulated. Sales of goods was repealed in the year 1930 and a separate act, Sales of Goods Act, was formed. तो अगर अभी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खोलोगे आपको ये सारे सेक्शंस नहीं मिलेंगे, बट आपको सेक्शन 1 से लेके 75 तक मिलेगा. सेक्शन 124 से लेके 238 तक you will be able to see in the bare act. Now talking about the short title, section 1 basically talks about the title of the bare act. What do you mean by title? It is called as Indian Contract Act of 1872. Talking about the extent, it applies to whole of India. Talking about the commencement date, we have already studied, it is 1st September 1872. Total there are about 11 chapters, but for few days we'll be just focusing on chapter 1 and chapter 2. Chapter 1 is from section 3 till section 9. Chapter 2 is from section 10 till section 30. So basically this is just the introductory part, and these are the things that you are supposed to remember. Now moving on to what do you mean by the term proposal. Suppose there are two parties, one is A and other one is B. A ने ऑफर दिया, A ने प्रपोज किया या ऑफर दिया that will you buy my book Indian Contract Act for ₹50. This is the offer. Why am I talking that this statement is called as offer? Because यहाँ पे A का willingness है, A की इच्छा है कि उसको किताब सेल करनी है, उसने ऑफर दिया. प्रपोजल का मतलब यही होता है जहां आप अपनी इच्छा दूसरे पार्टी को कम्युनिकेट करते हो. एग्जाम्पल सेक्शन 2A बोलता है प्रपोजल का मतलब तब होता है when one party is sharing his willingness with the other party. A is sharing his willingness with B. Willingness means इच्छा शेयर कर रहा है. किस चीज की इच्छा? दो चीजें हैं यहाँ पे. To do something
ये वाला एग्जाम्पल टू डू समथिंग है, विल यू बाई माई बुक, दिस इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, सेलिंग इट, राइट, और abstain from doing, abstain from doing. What do you mean by abstain from doing? For example, A ने B को बोला, A ने B को बोला, do not sue me, do not sue me. If you do not sue me, I will pay you ₹100 crore. अगर आप मुझे sue नहीं करोगे तो मैं आपको 100 crore rupees दूंगा. So this is the act of not doing. Not doing what? Not suing. Abstain from doing. अगर आप मुझे sue नहीं करोगे तो मैं आपको certain amount दूंगा. Certain amount has to be specified. 100 crore की 200 crore, whatever. Right? So proposal का मतलब होता है जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी विलिंगनेस कम्युनिकेट करता है कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए. इसी को हम लोग प्रपोजल बोलते हैं. इसी को हम लोग प्रपोजल बोलते हैं जो सेक्शन 2 क्लॉज ए में डिफाइंड है. राइट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रॉमिस? या फिर हम लोग बोल सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सेप्टेंस? Again, I am repeating the same example. There is one party A, there is other party B. A ने अपनी willingness communicate की. A ने अपनी willingness communicate की. ये willingness क्यों communicate की? या कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए. Abstain from doing. और इस willingness का object क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है इस विलिंगनेस का? ए ने जो विलिंगनेस बी के साथ शेयर की है, इस विलिंगनेस शेयर करने का ऑब्जेक्ट क्या है? कि मैं बी का यस ले सकूं, कि मैं बी का यस ले सकूं. दिस इज द ऑब्जेक्ट. सो प्रॉमिस का मतलब होता है जब जिस पार्टी को हम लोगों ने विलिंगनेस शेयर की है, जिस पार्टी के साथ हम लोगों ने विलिंगनेस शेयर की है, वो पार्टी अपना असेंट दे दे, अपना यस दे दे. और जब वो यस देगी उसको बोला जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल. एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल. एंड व्हेन दिस एक्सेप्टेंस इज डन, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉमिस. जब ये यस हो जाता है, जब ये यस हो गया, तब वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है. और यस का असेंट देने का मतलब होता है एक्सेप्टेंस. आई होप इट इज क्लियर. What is consideration now? Now in my previous example only, if I talk about, A ने जब बोला will you buy my Indian Contract Act for ₹50, इसने ऑफर दिया B को. A ने ऑफर दिया B को. B ने yes बोल दिया. इसका मतलब एक्सेप्टेंस हो गया. एक्सेप्टेंस कन्वर्ट हो गया प्रॉमिस में. एंड उसने बी ने ₹50 ए को दे दिए. ए ने क्या दिया बी को? ए ने बुक दिया बी को. एंड बी ने क्या दिया? ₹50. तो बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? बी के लिए कंसिडरेशन है बुक. एंड ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? ए के लिए कंसिडरेशन है मनी, विच इज ₹50. तो इसका मतलब आज we were just introducing the terms, what is proposal, promise, agreement या what is consideration. तो अभी तक हम लोगों को समझ में आया consideration हमेशा मनी नहीं होता. It is not always money. मनी तो है consideration but not always money. It is something else also. For example, in our example, it is book. So consideration means something in return. Something in return. This is consideration. Now, what is agreement? Agreement का मतलब होता है promise or set of promises forming consideration for each other. What do you mean by this statement? Promise or set of promises forming consideration for each other.
ये जो एक पार्टी ने बी पार्टी को बुक दी एंड बी ने उसको ₹50 दिए, तो दिस इज अ प्रॉमिस। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें बुक दूंगा, बी ने प्रॉमिस किया आई विल गिव यू ₹50, सो दिस इज अ प्रॉमिस। प्रॉमिस है यस, एंड कंसिडरेशन है। प्रॉमिस है कि मैं दूंगा और प्लस उन्होंने दी, प्रॉमिस कि मैं दूंगा प्लस उन्होंने जब दी, तो दिस प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट। प्रॉमिस है और उसको निभाया, दिस इज कॉल्ड अग्रीमेंट, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट कि एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है? एग्रीमेंट तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब इनका एसेंशियल चीज फुलफिल होती है, विच इज कॉल्ड एज इन्फोर्सिएबिलिटी। इन्फोर्सिएबिलिटी, जब एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी होती है तब वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। What do you mean by the term enforceability? This has not been defined anywhere. Not defined anywhere. But then, what do you mean by this term? If you refer section 10 and section 11, you get to understand what do you mean by the term enforceability. 10 बोलता है what agreements are contract. कौन से agreement को contract बोला जाता है? इसका आंसर है वो एग्रीमेंट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं जहां पे फ्री कंसेंट हो, पार्टीज कॉम्पिटेंट हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो एंड नॉट वॉइड हो। ये सारे वर्ड्स हम लोग लेटर वीडियोस में समझेंगे, बस अभी जानकर रखिए। इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब होता है सेक्शन 10 प्लस 11। 11 बोलता है मेजर होना चाहिए पर्सन, साउंड माइंड होना चाहिए एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, इसके बारे में भी हम लोग बाद की वीडियोस में बात करेंगे। तो अभी बस इतना जान के रखो, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक टर्म जरूरी है, इन्फोर्सिबिलिटी। एंड इन्फोर्सिबिलिटी कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 10 एंड 11। एंड टू रिमेंबर, 2A डिफाइन करता है प्रपोजल, आपको ये आज याद रखना है। 2B डिफाइन करता है प्रॉमिस। 2C डिफाइन करता है कौन है प्रॉमिसर एंड कौन है प्रॉमिसी। 2D डिफाइन करता है कंसिडरेशन को। 2D डिफाइन करता है कंसिडरेशन को एंड 2E डिफाइन करता है एग्रीमेंट को। 2E डिफाइन करता है एग्रीमेंट को। बस इतना आपको याद रखना है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप you liked this video. If you liked this video, do share and subscribe to my channel. Thank you.